Hello students, in this particular video we are going to discuss about vegetative propagation. Vegetative propagation takes place in plants, and as the name says, in this propagation plants develops from the vegetative parts of a plant like root, stems and leaves, and it generally takes place in many perennial plants. Now vegetative propagation is of two types, that is natural and artificial. So first we will discuss about the methods of natural vegetative propagation. Now, natural vegetative propagation takes place by roots, by stems, by leaves. So, as I can show you that by roots it takes place in many plants like dahlia, guava, sweet potato, asparagus, etc. So there are so many examples, and as the name says, by roots. So in this, what happened that the roots of some plants develop adventitious buds which grows to form new plants, and I can show you a picture of it. As you can see here, it's a root tuber of dahlia. So as you can see, these root tubers, these are the swollen roots which develops from the roots. So this is how it takes place in many plants. Then next is by stems. So generally, different types of underground stem structures bearing a few birds that take part in vegetative propagation. And there are some examples like potato. Potato is a very common example, and you know very well that potato is a underground stem, and it is also called tuber. So as you can see the picture, that it also have eye. These are the nodes basically, which is also called eye, as you can see in the picture. And these eyes, they start germinating and they grow buds which is called eye buds, and from here adventitious buds they arises. ठीक है, and they hold the soil, and this is how a tuber grows. A young shoot from it grows and it develops into a new potato plant. Then next is by leaves. By leaves, it is already given in your book. I think it's bryophyllum, and I am also having one diagram I can show you regarding leaves. That is bryophyllum is a very good example, and there is one more example of it is begonia. Okay, these are the in this what happened that the leaves of the plants, they have adventitious buds and they help in vegetative propagation. As you can see that the notch, the margin of these leaves, they have these adventitious buds, or when these adventitious buds they fall down, it will grow into a new plant. ठीक है, इसमें से बर्ड से रूट्स अराइज होंगी और रूट से एक नया प्लांट बन जाएगा. तो विद द हेल्प ऑफ लीव्स न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो grow. So example is bryophyllum and begonia. Then come to the artificial vegetative propagation. In this particular method, cutting, layering and grafting takes place, and these three methods generally takes place for agricultural and horticultural purposes. That means for decorative plants also, as well as for agriculture purpose also. And as the name says, artificial propagation, because it is done manually. इट कैन नॉट बी डन बाय ऑन इट्स ओन. ये अपने आप नहीं हो सकते. नेचुरल मेथड्स काफ़ी हद तक अपने आप भी ये अपने आप ग्रो होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवानी पड़ती है. तो विदाउट मैनुअल हेल्प it is not done. So first is cutting, and again I'll show you the picture of cutting. In this what happened, a cutting of stem, root or leaf can be used for vegetative propagation. A cutting gives off roots when placed partly under moist soil and then develops into a new plant. And many horticultural plants like grapes, falsa, sugarcane and rose are propagated very commonly by this
method. And you can see here, it's an example, it's a picture of sugarcane, and you know very well that sugarcane are having these nodes, rounded circular nodes or internodes, and from here this part adventitious buds they arise. And when you cut this particular part along with these buds and grow it into a soil, it will start grow into an individual new plant. वो अपने आप वो हिस्सा एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है, आपको सीड्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है. ठीक है, तो शुगर केन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन से, एंड rows also. Then come to the next method, that is layering. In layering, a part of the stem of a plant is buried in the soil while it is still attached and supported by the parent plant. Soon, the layered stem grows roots and later develops into a new plant. And for this, I can show you a picture of layering. It is done in jasmine, that is chameli. You can see this is stem of the plant. और generally एक चीज़ और है, ये plants थोड़े नीचे होते हैं, इनकी जो ब्रांचिंग होती है वो काफ़ी ग्राउंड लेवल से शुरू होती है, वेरी नियर टू द ग्राउंड. सो व्हाट हैपन, जनरली हम इनको स्ट्रेच करके, ये स्टेम जो है वो इसके संग अटैच्ड है और उसके साथ ही उस प्लांट को थोड़ा सा हमने सॉइल के अंदर आराम से इजीली बरी कर सकते हैं इसको, बरिड. एंड देन व्हाट हैपन, after some time adventitious roots arises from that particular part, from nodes and internodes present in the stem, और वहाँ से एक नया प्लांटलेट ग्रो होने लगता है और रूट्स जो होती हैं वो सॉइल को होल्ड कर लेती हैं. और जब वो अच्छे से ग्रो हो जाता है तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं, एंड नाउ दिस न्यू प्लांटलेट grows into a new jasmine plant. And this particular method takes place in raspberry, strawberry and jasmine. Now come to the next method, that is grafting. I can show you. Just give me a. So in this what happened? In grafting method, in grafting method, a very young scion. What happened in this? In this, they take a part of a stem, part of desired plant variety with superior characters. इसमें सियोन और स्टॉक दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. नाउ स्टॉक इज़ द रूटेड प्लांट. एक प्लांट जो ऑलरेडी जिसकी रूट्स हैं, जो लगा हुआ है रूट के अंदर, वो दैट इज़ नोन एज स्टॉक. और जिसको आपको उसके साथ अटैच करना है उसका आप पार्ट कट करके लाएंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड सियोन. इट इज़ द पार्ट ऑफ दैट प्लांट जिसको आपको लगाना है उसके साथ. ठीक है, सो यू शुड नो द दीज टर्म्स, व्हाट इज स्टॉक एंड सियोन. एंड दे बोथ आर ग्राफ्टेड. दोनों को अटैच करके यू रैप इट विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉथ. ठीक है, एंड आफ्टर व्हाट हैपन्स, different, sometimes the same variety and sometimes the different varieties can also be grafted. So examples are sweet orange, lemon, grapefruit, mango, apple, guava, rubber plant, citrus. All these can be easily grafted. तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि आपने एक प्लांट ऑलरेडी था उसके साथ एक अटैच कर दिया, एक कट करके एक दूसरा पार्ट उसके साथ लगा दिया. ये वैरायटी दोनों की सेम भी हो सकती है, यानी कि अगर आप चाहो तो मैंगो का कर रहे हैं तो मैंगो प्लांट का ही स्टॉक और मैंगो का ही सियोन. ठीक है, और इट कैन बी ग्राफ्टेड ऑन द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द सेम प्लांट. वेराइटी डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग. मैंगो की कई वेराइटीज़ होती हैं, सो यू कैन यूज़ ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑल्सो. तो इससे भी आप इसको करा सकते हैं ग्राफ्टिंग. सो इट इज़ अ वेरी कॉमन मेथड, ग्राफ्टिंग. Now, what are the advantages of this vegetative propagation? Why we do that? So, let's go back first. So, what are the advantages of this vegetative propagation? Vegetative propagation is usually
Vegetative propagation is usually a means of propagating plants which do not produce viable seeds. जिन plants में seeds viable नहीं होते, ठीक है, वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है. We need it. और लाइक बनाना, जैस्मिन, रोज़, ग्रेप एट्सेट्रा, या जिनके सीड्स बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए डॉर्मेंट हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, देयर वी नीड दैम. इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग डिजीज़ फ्री प्लांट्स. ये अगर आपका कोई भी प्लांट्स वहाँ पे हैं पर्टिकुलर वेराइटी के, उनमें डिजीज़ लग गया है और आप उसके सीड्स को यूज़ नहीं कर सकते, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस सीड्स नाउ, सो आप उसका हेल्दी वेजिटेटिव पार्ट लेके नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. Then all plants produced by vegetative propagation are genetically similar to the parent plant and have all its characteristics. Sometimes what happen कि we need a particular type of plant only, हमें वही variety चाहिए और वो variety जो है वो एक जगह पे ही मिल रही है और उसकी वो that is quite healthy and better, so we need that. तो हम वही जेनेटिकली, तब वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं क्योंकि इनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, सो ऑब्वियसली दे आर जेनेटिकली सेम, so we can easily obtain the same plants. And plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those which are produced from seeds. Definitely, when you grow any plant with the help of seeds, they need more maintenance, more care, like a small child. But those plants which grow with the help of vegetative propagation, they do not require much maintenance, much care. बहुत, क्योंकि वो बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में, क्योंकि वो सीड्स से ग्रो नहीं हो रहे हैं ना, तो ना तो उनको इतनी केयर की ज़रूरत पड़ती है, ना वो इतनी मेंटेनेंस मांगते हैं. सो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स और एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव propagation. So it is a very important topic, students, I must say. So please, you should know all the methods name and at least there are 2 to 3 examples. So please, you can, with the help of this video, you can easily note down in your notebooks about all the methods and their examples. Now we're going to discuss the next topic in the next video.